नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क टीम ने 18/10/2022 को हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला का दौरा किया। डॉक्टर संदीप शर्मा, निदेशक हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला ने इस महत्वपूर्ण यात्रा के हिस्से के रूप में इस संस्थान को चुनने के लिए जनरल नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क प्रोग्राम डेडिकेट्स का स्वागत किया। Our institute is dealing in forestry activities, mainly trees, shrubs, herbs and medicinal plants of Himalayan region, foothills of Himalaya, mid hills of Himalaya, then high hills of Himalayas, and also we are working on trans-Himalayan region, which will be detailed in our presentation by Dr. Jistu. So I also welcome Kamaljeet Singh ji and also extend my thanks to him selecting HFRE as one of the venue for your Shimla visit. These are some of the demonstration plots in the cold desert regions. You know, just like the hot desert, we have a cold desert region here. And I'll just go quickly through the ongoing research activities what we have. We have a, it's a complex this thing, and then now we have a 16 all India coordinated research projects which we are doing with all our institutes, all pan India. So it's not in isolation, it's a combined effort where we're working on the entire country is working on one theme. So that's a good initiative which has been done. We do a lot of major consultancy services, especially for environmental impact assessments. We do a lot of extension and training activities. I first take you to the cold deserts. Okay, I'm coming from the I'll come downward from the cold desert from this thing. This is the Ladakh area. This is the Pangyangso. This is the endothermic lake. We have landscape like this here. There's a lot of soil weathering. When you drive through this landscape, this is what you see. Beautiful mountains. Then we come down to the source of the rivers. These are, glacial rakes from which the rivers start. This is the origin of the river Parvati, which flows through Kullu and joins the Bias. This is the Spiti river, where in the cold desert the habitation is only around the river, otherwise the whole landscape is barren. These are the major forest types you come across in this region. We come from subtropical forests to temperate grasslands, temperate broadleaf conifer mixed, subalpine and the alpine forests. The floral diversity of the state is around 3,500 plants we have, angiosperming plants. Then half of them are endemic to the western and northwestern Himalaya. That's why it's so important. This is our state flower. Earlier the state flower was the red rhododendron, but now it's the pink rhododendron. This is a straight tree, the citrus deodar. Deodar, like I said, deo means God, dar means tree. It's the tree of the gods. It's highly respected and revered in this part of the country.
Then we have the alpine pastures, the moist alpine pastures. This is from the UNESCO Heritage Site, the Great Himalayan National Park in Kullu. Then we come down, we get the tall mixed conifers, where the water starts coming down. We have the broadleaf forest. Then we come to this zone, which we have pure deodar patches. This is the catchment forest you drove through in the morning. This is a man-made forest. This forest was the catchment for the water supply to similar town. You'll be going after this to the Indian Institute of Advanced Studies. That was the seat of the governance during the British rule during summers. The water from here would flow to that region without any pump, just by gravity. And even today, those pipes are still there. Then we have the andromedia and the rhododendrons. When you go a little lower, when you come in February, March, April, this is what you see in the forest, a lot of rhododendrons in bloom. And then last, the subtropical is the Renuka-ji area. This is a lake, the Renuka-ji lake. It's a very sacred lake. It's like a woman with the child on her back. That's what they say. We had the millennium, I'll skip all through this because we didn't fulfill those. Then now we have the sustainable development goals. I hope we're able to fulfill this. But these sustainable goals are of specific relevance to the mountain communities, where the population is predominantly rural and half of the rural inhabitants are highly dependent on forest resources. Mountain community is like indigenous community. Yeah, indigenous community. This, a clear connection between sustainable use and protection of mountain forests. And mountain forests also contribute to human welfare well beyond the local community. They provide us the ecosystem services. When you come to see the importance of the mountains in the Himalaya, in the most dominating geographical features, climate influence, defense, sources of rivers, fertile soil, hydroelectricity, forest wealth, agriculture, horticulture, tourism, minerals, and pilgrims. The list is boundless. You see, you could say that we benefit from this mountain and depend on it for the ecosystem goods and services. In Colombia, we're also a very mountainous country. We have the Andes, and when you drive through the countryside in Colombia, you can see large patches of land being, for example, affected by deforestation and other industrial activities of mining and you can see big stretches of land in the mountains and the forest. I haven't seen that much here, so I just wanted to ask if there's any conservation policies. What is the main thing? What I personally feel is, we have not been able to educate the people in the communities of the disastrous effect which is going to have from this deforestation. When we go, like we as an institute, we have a lot of programs like such. When we go, people are very eager to, listen to such things. They're not aware of what is going to happen. But there's a lot of deforestation going on here. And for example, in Panama, we have a lot of issues with the mining companies, and this kind of contracts with the actual government. My question is, do you have these issues that, for example, you have lots of deforestation and then no regulation in the deforestation policies? And do you have any public awareness campaigns or some sort of message that you give to your communities so they are more aware of climate change and why they need to protect their forests? See, for the present, I would say not much in that. But slowly, it's coming. The climate change and global warming thing. This is the government is trying to hype it and get going somehow. But of late, there's not much, to be precise, not much was in this way. हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है जय नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम 75 डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को इंडिया में इनवाइट करते हैं। हमारा एज पर आवर प्रोग्राम वी इनवाइट यंग पॉलिटिशियंस, एंटरप्रेन्योर्स, राइजिंग स्टार्स और कोई भी ऐसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो जिसके लिए हमें हमारी कंट्री को फ़ायदा हो सकता है, हम उनको इनवाइट करते हैं। जो जनरल उम्र होती है इसमें 35 ईयर्स एज होती है, मैक्सिमम 40 ईयर्स। लास्ट ईयर नवंबर 2021 से हमारा ये प्रोग्राम शुरू हुआ है। अभी तक हम 6 बैच हमारा आया हुआ है अभी,
131 डेलीगेट्स आ चुके हैं और 36 कंट्रीज़ को हम कवर कर चुके हैं। अब ये जो डेलीगेट्स आया है ये पनामा, सेनेगल, डोमिनिकन रिपब्लिक, कोलंबिया एंड जर्मनी, 5 कंट्रीज़ के आए हुए हैं। ये लोग बहुत ही अपनी अपनी फील्ड के मास्टर हैं और हमारी किस्मत अच्छी है कि हमने आज हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में हमने आज विजिट किया और ऑल ऑफ देम आर वेरी हैप्पी हियर। जेंडेक्स डेमोक्रेसी नेटवर्क प्रोग्राम का जो आइडिया है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल इनको दिल्ली लाते हैं, 10 डेज़ की विजिट्स होती है। उन विजिट्स में एयर फेयर, बोर्डिंग, लॉजिंग सब हम ही बियर करते हैं। हम अपने जो मेन है, हम अपने डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन दिखाते हैं। हम ये सोच के चलते हैं कि ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी है। हम इनको अपने कल्चर के बारे दिखाते हैं, इनको डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के बारे दिखाते हैं, इनको अपने जो भी हमारे हाईलाइट्स है, जो भी हमारे यहाँ की इंडिया की इम्पोर्टेंट चीज़ें हम उनको दिखाते हैं और उसके बाद हम एक ग्रुप बनाते हैं। जैसे ऑलरेडी 131 कंट्रीज़ का एक ग्रुप बन चुका है, उसमें इनको भी ऐड कर दिया जाएगा, बिगर ग्रुप होता चला जाएगा। जब हमारे अभी 8 ग्रुप्स और आने हैं, 6 ग्रुप हो गए, 8 ग्रुप्स और आने हैं, तो मेरे हिसाब से 300 लोगों का एक ग्रुप बन जाएगा विद 75 डेमोक्रेटिक कंट्रीज। तो हमारा आइडिया यही है कि ये लोग अभी इस उम्र में 35 या 40 साल की उम्र में दे आर इन ए वेरी बिग पोजीशंस, तो 20 साल बाद, 15 साल बाद ये और भी हायर पोजीशन में जाएंगे। एट दैट टाइम दे विल रिमेंबर दी आवर इंडियन पीपल्स। और इस ग्रुप में एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगा, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमने 4 इंडियन डेलीगेट्स को भी लिया हुआ है जो अपनी अपनी फील्ड में मास्टर हैं। उसमें एक भक्ति शर्मा जी यहाँ खड़ी हैं, पीछे भी एक खड़े हैं। तो हमारा ये कहना है कि हमारे जो इंडियन डेलीगेट्स हैं वो भी इनके साथ इंटरेक्ट करें और वो भी हमारे ग्रुप में शामिल हो। Hello everyone, my name is Ndaipen. I am 31 and I come from to Senegal. I am a member of ruling party APR in Senegal. I am president of young female in my party and I am very glad to participate this program. But I discover the multiple facets in India culture, in India democracy, and many other. But thank you for the organize this program. Hi, I am May Makaslam from Colombia. I am executive producer and CEO of the Studio IMAC, a production company in Colombia. Right now, this program is very important for me because I am working right now in co-production and servicing with India, and this program in my life and my professional skills are wonderful. So thank you so much for ICC and the government in India. Hi, I'm Sarah from Colombia. I am very thankful for ICCR for inviting us here to this Next Gen program. We have had a great experience, and I think a lot of the stuff we've learned here we will be able to bring back to Colombia and hopefully teach everyone else in Colombia. Hello, my name is Ednoy Gonzalez from Panama. I'm here with 4 more guys from Panama too. We are having a really interesting and great experience here in India. We are really thankful to India's government for this opportunity. We think it's just a great moment to know about India's democracy, its culture, its diversity, which I think it's amazing. But at the same time, we have learned more about your spiritual and all your cultural things about this country. Today we're here with lots of delegates from other countries, and it has been really enriched for us. We are really thankful to your government and we hope to go back to our countries to continue working. मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी संदीप शर्मा जी का, जो इस समय डायरेक्टर हैं हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के। और हम ICCR में 6 कंट्री के 21 डेलीगेट्स के साथ और हिंदुस्तान के 4 डेलीगेट्स के साथ इस समय शिमला की वादियों में हैं। और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें इस समय फॉरेस्ट के बारे में जानने का मौका मिला। कहाँ पार्लियामेंट हाउस से लेके यहाँ पे गवर्नर हाउस और स्टेट असेंबली के बाद हम सीधे हिमालय की वादियों में आए हैं। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो ICCR हर महीने कर रहा है। जो डेमोक्रेटिक 75 कंट्रीज़ हैं वहाँ के डेलीगेट्स जो हैं वो हिंदुस्तान आते हैं और हिंदुस्तान में आके हमारी सभ्यता को समझते हैं, हमारे सनातन संस्कृति को समझते हैं और साथ में यहाँ के लोगों को भी समझते हैं। ये जानते हैं कि कितना हिंदुस्तान अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। ये जानते हैं कि किस तरीके से हमारा जो खान पान, हमारा रहन सहन और हमारे जो मीठी बोली बोलने वाले लोग जो हैं वो किस तरीके से इन लोगों के साथ घुल मिल गए हैं। जो मेनली जो डेलीगेट्स हमारे पास आए हैं, ये जो भारत में कल्चरल गतिविधियां क्या हो रही है,
कैसे भारत में जो डेमोक्रेसी है वो फल फूल रही है और भारत का जो विविधता है उसके बारे में इनको ज्ञान देना था। यहाँ हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान जो शिमला है, इसको इन्होंने विशेषकर इसलिए चुना कि हिमालयी क्षेत्रों में जो वन संपदा है और हिमालयी क्षेत्रों में जो वन है उसका कैसे संरक्षण किया जाए, यहाँ का जो क्लाइमेट चेंज है उसके बारे में इन्होंने जानकारी लेनी थी और जो भी वनों से संबंधित जो लाभ है, जो प्रत्यक्ष लाभ है और अप्रत्यक्ष लाभ है, उसके बारे में हमने विस्तार से इनमें चर्चा की। हमने जो हिमालय की नदियाँ हैं, हिमालय के ग्लेशियर्स हैं, इन पे भी इन डेलीगेट्स के साथ चर्चा की और इनको अवगत कराया कि किस तरह से हमारे जो संस्थान है इन सब पे कार्य कर रहा है और कम्युनिटीज़ के बारे में ये ज़्यादातर इंटरेस्टेड थे ये लोग। तो कम्युनिटीज़ के बारे में जो संस्थान ने अभी पिछले कुछ समय से गतिविधियाँ की, उसको भी हमने इन डेलीगेट्स के साथ शेयर किया। डिस्कशंस में बहुत सारी चीज़ें डेलीगेट्स ने पूछी, खासकर क्लाइमेट चेंज जो इशू है और कम्युनिटीज़ में क्या प्रभाव क्लाइमेट चेंज का हो रहा है, इसके बारे में इन्होंने काफ़ी क्वेश्चन रेज किए। तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इनका आंसर दिया। इसके बाद ये जो डेलीगेट्स हैं इनको हम अपने टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर ले गए, जहाँ जो संस्थान ने पिछले 1 दशक से जितनी भी तकनीक इजाद की, जो डेवलप की है, उन तकनीक का प्रदर्शन हमने अपने टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर में किया था। तो ये सारे डेलीगेट्स वहाँ आए, हमने इनको जो जो टेक्निक हमारे संस्थान के पास है जिनका हमने प्रदर्शन किया है तो वो उनके साथ साझा की। उस दौरान भी बहुत सारे प्रश्न हुए और प्रश्नों के जो हमारे वैज्ञानिक इन डेलीगेट्स के साथ थे, तो हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी विशेषज्ञता से उन डेलीगेट्स के जो प्रश्न हैं उनका उत्तर दिया। डेलीगेट्स हमें ये लगा कि जो हमारा कार्य है और ख़ासकर वनों से संबंधित शोध है उस पर इन्होंने काफ़ी रुचि दिखाई और बहुत सारे डेलीगेट्स तो ये भी कह रहे थे कि जो उनकी जो देश है वहाँ भी माउंटेनियस रीजन, पहाड़ ज़्यादा है, तो इस तरह के कार्य नेचुरली जो इन्होंने यहाँ देखे ये आने वाले समय में अपने जो कंट्रीज़ है, अपने देश हैं, उसमें भी ये चाहेंगे कि इस तरह के कार्य जो कंजर्वेशन, खासकर फॉरेस्ट कंजर्वेशन का है, क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो हमारे कार्य है और जो लोकल ट्रेडिशनल नॉलेज है, जड़ी बूटियाँ हैं, उसके कार्य जो संस्थान कर रहा है, इसको जरूर ये जो डेलीगेट्स थे अपने अपने देशों में रेप्लिकेट करें।